we are producing lot of technocrat, we are producing lot of qualified person in the market. What is the need? We need today skilled people. How many skilled people we are the producing? So only a degree is not sufficient if you can move toward the market or move toward the industry. When we are talking about the industry peoples, they feel that there is a lot of gap between the industry and academia, even in the research field, because the concept of the students and basics of the students, they are very poor, and sometimes they are unable to the understand. So I feel that why not to we include this types of the things which are required for the actual for the student. I know that in this IFDP, number of the students they are performing or they are in the third semester of the M-Farm, number of the students, they are in the near to completion of the M-Farm or after the M-Farm, faculty members, some of the researchers, they are also join or available on this meeting. So I hope that this lecture and this talk will be the helpful to you. I have also visited number of the institutes, and during this visiting or our experience, I feel that what is the problem in the concept of the research and how the peoples are the unable to understand how we can start our the research. That is why we have taken this is the presentation. So I hope that it can be useful to you. So first we know what is the concept, what is the utility of the research. So the word is the re-insert. This is the taken in the 1577. First time it is the launch, and the meaning of this one, the earliest record is the given in the 1575. I was already mentioned that ki how we can develop the concept in a particular thing. Let us consider, I have taken one of the example ki if you are staying in the village, if you are staying in the city, if you are staying in the big city like that, their utility application requirement is the gradually increasing. What in terms of the concept, there is the no any specific meaning. Research means research. So before to start the research, we need to know that what is the definition of research, what is the utility of the research, what is the concept, what is the idea, why you are performing this work. That is why I have taken this is the very small topic. So an understanding of the basic element of the research, it is essential for a good research practice. First, we know these, what are the element and part of the research design. This is very important because it is already well said, well begin is half done. एक कहावत है हिंदी में, आधी छोड़ सारी को धावे, सारी बचे ना आधी पावे. It means nowadays we are moving fast. How we can achieve the things at a very fast? Okay, you can achieve, you can gain something, but at a long time, what happened that if you can compare some of the faculty, if you can compare some of the professional value in the different state, then you feel that what is the strength, what is the application, and what is the, you can say, dedication of the professor. I just want to give some of the example. I asked one of the professor, sir, our student want to work on this topic. So he straightforward say that, Dr. G.D. Gupta, I am not expert on this field. Even if I ask the question, sir, I want to organize one of the lecture on COVID-19 related value, he straightforward say that, Dr. Gupta, I am not expert this field. So gentlemen, some of the expertise, some of the ethics, some of the moral values are very important. Nowadays, you are expert or not expert any field, what you can accept these so many things. That is why number of the research paper, thousands of the research paper, even person is not know what is the actual definition, characteristic, and the value of the COVID virus, what they can be published, and published. That is why our research, our values, our faith, it is gradually deteriorated. I want to ask one question to all of you. क्यों कहते हैं हम इंटरनेशनल पेपर लाइए? What is the need? I am doing the work in the India. Why not asking what are you doing? What is your research paper? हम कहते हैं Indian data. When we are the representing thing in the form of the international books, international research paper, then we can say there is the value. It means something is the gap, something is the problem. We need to justify, क्योंकि आज नहीं तो कब, अब समय आ गया है.
So if we not do the things, then we have to be the sufferer and we are go to the back foot. That is why it is essential we can accept the challenge in the true and the especially we can say in the faithful and ethical manner. So what are the component of the research? What are the step in the research to be required in the process? What are research definition, method, and types of the example? Gentlemen, why I have select this topic? During the presentation, one of the AICT chairman and some of the experts, they are available on the online. And we are the presenting of the AICT CII from ISF College of Pharmacy, Moga. He just straightforward say that Dr. Gupta, your institute, your team is the doing good job in the research, academia, patent, MOU, and publication, and everything is the okay. If you have the excellent team, if you have the excellent infrastructure, if you have each and everything, you just give me one name of the monograph which is published by your team in some of the professional books. Gentlemen, now this is the time. This is the time. If you want to the actual researcher, if you want to say that I am involved in the research, no need to do loose work. नीड टू डू ओनली द स्पेसिफिक. एक व्यक्ति जिसने जिस दिन आल्पिन बनाई होगी, क्या वो रिसर्च नहीं थी? Why we are doing, why we are the moving very big topic, very difficult polymer. That is why I am very happy. Here he has the mention that you are using and you want to approach here is the integrated some of the natural resources. Our government, our you can say MSME, LSSDC, IIC, they all want how we can utilize the infrastructure, how we can utilize the things. Gentlemen, I want to over here, we are not searching our what is the actual problem. अभी अभी एक एड आता है दिल्ली के, सभी ने लोगों ने देखा होगा कि जो पराली है इट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी ये, एक साल की प्रॉब्लम नहीं थी. फॉर द लॉन्ग टाइम इट इज द कंटिन्यू. नाउ अ डे the crowd of the city is the increase, so that fumes it can be create the problem. तो इसके लिए हम ज्यादा चिंतित होंगे. What happened that सब लोगों ने काम अपने अपने तरह से चालू कर दिया, बस some of the person work on that because एक किसान पराली को जलाना क्यों चाहता है? ये this is the one of the big question. तो another question है यार, आप जलाना चाहते हो तो दूसरे को परेशानी क्यों, लेकिन वो क्या करे? What he will do? इसके लिए रिसर्च करना आवश्यक थी या नहीं थी? बिकॉज आई नो दैट दिस पराली with the soil it will take long time. Our gentlemen in Punjab in a year they are producing the 3 crops. 3 crops लेते हैं, 4 क्रॉप तक ले लेते हैं, साइड क्रॉप तक ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर, जब हम एमपी की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, समवेयर अदर प्लेसेस की बात करते हैं, तो हाउ दे आर यूजिंग द पंजाब पीपल्स, पंजाब फार्मर लैंड इन ए प्रॉपर मैनर. लेट अस कंसीडर, जिसको बंदिया कहते हैं, बीच का डिवाइडर कहते हैं, वह पॉपुलर का प्लांट लगा देते हैं और वो प्लांट 3 साल के बाद 4-5 हजार रुपए में बिकता है. देयर इज द नो नीड टू द प्रिकॉशन. ईश्वर ने उसको इस तरह की प्रकृति दी है कि विंटर में उसमें कोई पत्ता नहीं होता है, समर में पत्ते होते हैं. इट मींस inside there is the crops, it is not affected. So this types of the things, how we can utilize upon infrastructure, how we can utilize our land. Farmer they are using the land properly. That is why need a specific research. तो कुछ लोगों ने काम किया कि जो गलने का टाइम है, it will take 3 to 4 months. इतना तो वो खाली नहीं रह सकता है ना. How it can be convert in the form of the you can see the fertilizer. So that is why need a research. नंबर ऑफ द पर्सन इट कैन बी आल्सो यूजिंग. अब होता है इसको आप क्रॉप को काटिए, जब क्रॉप को काटते हैं और बेचते हैं, सो कॉस्ट इट विल बी द नियर इक्विवेलेंट टू दिस वन. अभी ये कौन बनेगा करोड़पति पर एक प्रोग्राम आ रहा था, मैंने देखा, और उस बच्चे ने बहुत अच्छा खेला, एक्सीलेंट टू द एक्सीलेंट. और ही मेंशन दैट अमिताभ बच्चन को उसने बोला, सर मैं 4 महीने से मैंने जो धान बोई थी, किसानी की थी, we did the lot of work in the land, और जब 4 महीने बाद बेची तो 3,500 रुपए हमें मुनाफा हुआ. यानी कि here the person only the pharmacy people. So not only that, we can say the pharmacy people, they don't know the about the research, they don't know about the agriculture value, because fertilizer, polymer, protection, and there is the number of things we can do in the terms as a pharmaceutical sciences.
वी कैन ग्रो, हमारी डेफिनेशन में ही है, cultivation, collection, identification. This is the first of the value, not only the medicinal plant. These value we can to the inculcate in our system. So gentlemen, तो जब ये देखा गया कि how we can develop, how we can benefited with the, you can say, farmers, for this purpose we need some of the research and excellent work. कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना ये है कि one of the pharmacy peoples in those days, not only the pharmacy work, not only the drug designing, there is the lot of opportunity in the artificial intelligence, lot of opportunity in the medical devices, lot of opportunity in the storage condition. Now this is the lot of the work is the required. Even you know that the COVID vaccine is the available, it is required the strong स्टोरेज कंडीशन -70 डिग्री सेल्सियस. इज इट पॉसिबल? एक फ्लाइट से दूसरे शहर में हमारी मेडिसिन जाती है, उसको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना, तहसील लेवल पर आना, विलेज लेवल पर आना. दिस इज द लॉन्ग रिसर्च. सो वी हैव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वी कैन डू. वी कैन डिजाइन द डिवाइस. इन दोज डे design patent is the one of the most important thing in the MSME. They are providing the fund, so we need to the work on this types of the label. So gentlemen, research, there is the no any specific definition. If you can go in the Google and show any places, there are the different definition, but I have to the include here in a precise manner. So research depends as the creation of the new knowledge. Not only new knowledge, it can use existing knowledge, how it can be beneficial of the existing knowledge, how you can reduce the you can say difficulty in the existing, how you can develop so that it can be in the form of the compact form, usable form, and people can be utilize the technique in a justified manner, in a new and creative way, so as to generate as a new concept, methodology, and understanding of the things. Let us consider one example. जब मैं था, कूलर होता था, खड़खड़ करता रहता था, जाके स्विच बंद करना पड़ता था. आज और स्पेसिफिक है, आफ्टर 1 year वी नीड टू चेंज. जो खस लगी होती थी वो गल जाती थी. आज देयर द डिफरेंट मटेरियल इज द अवेलेबल. आज उसके लिए रिमोट आ गए हैं, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग दी फैसिलिटी. सो नॉट ओनली दिस कि हम नया ही करना चाहते हैं, अजूबा ही चाहिए, नॉट एट ऑल. ओनली द थिंग्स इज रिक्वायर्ड कि व्हाट इज द थ्रस्ट एरिया. ये जानना बहुत जरूरी है. किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस? टू पब्लिश द 2 पेपर, टू पब्लिश द 3 पेपर, और वी वांट टू द प्रमोशन, जस्टिफाई इट. We are the academician, number of time PhD is the required, so we are doing the PhD only for number of time that we can say for the, that's okay, but it is not essential to the all. Let us consider 10 people, 20 people. So some of the students, they want to grow in the industry, they want to establish their startup, innovation, entrepreneurship, and they want to work their industry. So they can do the work at a basic level, and they can develop some of the things which are required to the society. So new concept, methodology, and understanding. This could include synthesis and analysis of the previous research to extend that will lead to a new creative outcome. अभी आपको ये बता दें, पूरी कंट्री के अंदर कल्ली में बैठा था सहस्त्र बुद्धि जी, जो कि AICTE के चेयरमैन है, वही स्पीच दे रहे थे. बिकॉज our new education policy, our new, you can say, this is the research, everybody they want what is the outcome. अरे यार छोड़ दीजिए, आप इतने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, what is the value of the outcome? Number of time we are also talking and thinking about it here. Some of the principal and some of the academician also is there. So I need to do which types of the product in the form of the student are you producing. हमारी कितनी जिम्मेवारी बढ़ती चली जा रही, because number of the challenges are the available in the market. उन चैलेंज को हमें फाइट कैसे करना है. तो चाहे रिसर्च हो, चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे आपका रिसोर्सेस का यूटिलाइज हो, these things is the required and considerable. So I have additionally have taken this one, outcome based education and research. आप NBA की बात करें, आप NAC की बात करें, what is there? NBA क्या कहता है, NAC क्या कहता है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? Everybody is talking about the outcome. Everybody about talking the outcome. आपने रिसर्च पेपर लिखा फॉर व्हाट पर्पज, आपने लेक्चर डिलीवरी की फॉर व्हाट पर्पज, एवरीथिंग इज द आउटकम. एक बच्चा क्या लेके जाएगा,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज मेरे लिए चैलेंज है. आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर दिस इज द ओनली फॉर इन्विटेशन. आया इसलिए मुझे 1 घंटे बोलना है. अगर मैं इस लेक्चर के द्वारा if I am unable to deliver or unable to give something to the our student or academician, then I feel that we have waste our this is the energy, or we can the waste the time to the number of the people. So I feel that either you can know that what is the presentation value, what is the utility of the concept, what we can come to the outcome. तो आज जितने भी education system है, if they are successful, only and only by the outcome. क्योंकि जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, जो रिसर्च करके जा रहा है, वो आउटकम क्या लेके जा रहा है. सो दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी टू ईच एंड एवरीबडी. वी हैव ट्राई टू डेवलप आवर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द आउटकम बेस्ड. आपको बहुत मजा आएगा एंड फील यू कैन फील दैट कि व्हाट टाइप्स ऑफ द फीडबैक इज द रिक्वायर्ड टू ईच एंड एवरीबडी. आई हैव हियर मेंशन सम ऑफ द research characteristic. So a systemic approach must be followed for accurate data. Not number of time we feel that we are using number of diaries, we are the unable to the writing skill. तो हम एक छोटे कागज पर लिख लिया, बड़े कागज पर लिख लिया. We are the unable to maintain the systematic approach, because systematic approach is one of the important component in the research. That is why I want to know that if you have completed research and if you want to publish one of the patent, आप फाइल करते हो. फॉर दिस पर्पस दे आर द आस्किंग व्हाट इज द ओरिजिनलिटी. अगर एक सेम वर्क को 2-3 लोग पब्लिश करते हैं, देन हाउ टू जस्टिफाई. फॉर दिस पर्पस नीड अ एक्यूरेट अप्रोच, accurate data maintained, so that we can say I am the first person to approach on this topic. Researchers need to practice ethics and code of conduct because it is one of the most important thing. आपको मैं इसके द्वारा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं. When I was in lecture and working in Lachu College and I have attended one of the FDP. मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कह सकता हूं कि जीवन की आज तक की मैंने अगर कोई FDP अटेंड की है तो वो FDP थी. एंड देयर इज द मीनिंग ऑफ द FDP. मीनिंग ऑफ द FDP आज मैं भी नहीं करा पाया हूं. मैंने आज से कम 25-30 FDP कर दी होंगी और 10-15 में भाषण दे दिए होंगे. बट दिस FDP मीन्स FGP, तो वो मैं नहीं करा पाया. वहां पर एक आए थे काफी बुजुर्ग, नियर अबाउट द 75-year-old, दैट ही मेंशन एट दैट टाइम in 2000, you can say not 1997 की बात कर रहा हूं मैं. उस समय उस व्यक्ति ने एक चीज मेंशन की थी कि आई रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट, जीवन में कुछ भी करना लेकिन गलत रेफरेंस नहीं लिखना. गलत रेफरेंस नहीं लिखना, क्योंकि एक रेफरेंस जो आपने रिसर्च पेपर में लिखा है वो कितनी बार रॉन्ग मल्टीप्लाई होगा, यू कांट इमेजिन. आज मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी से निवेदन करना चाहता हूं. कई लोग कहते हैं निगेटिव रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव. आज मैंने सोच लिया ये इतना घुलेगा तो घुलेगा ही क्या, और हम छोड़ते तभी है जब तक वो घुलता नहीं है, और हम तब तक पेपर में लिखते रहते हैं कि इट इज एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाट इज दिस. हमने आज मैंने सोच लिया कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% बढ़ानी है, चाहे वो बढ़े या नहीं बढ़े, बट 90% बढ़ानी है. आई हैव आल्सो चेक नंबर ऑफ द थीसिस एंड व्हाट आई फील दैट pre-decided result and pre-decided result you have feel that कि जो मैंने सोचा सिर्फ वही लिखना है. and always we not to the stop till it can, we can say it is the more effective than सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी. सुमित सर आपको आ रही है? नहीं आ रही मैडम, नहीं आ रही है. नहीं आ रही. जीडी गुप्ता सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Hello. I think sir will connect again. Maybe there are some technical issues, so please be patient. We will wait for Dr. GD Gupta sir.
Sir, on behalf of Faculty of Pharmacy, I also welcome Dr. M.K. Gupta, sir, is here. Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Dr. Nilesh Malvi, sir, is also here, sir. Good afternoon, sir. Dr. Nilesh, sir. Good morning, Gupta sir. Good morning. Good morning. Good morning, Nilesh sir. Good morning to all research scholars Good morning. Good who morning. are Good here. morning. Sir. Good morning. हाँ जी मालवी जी, क्या हाल है? गुप्ता सर आप कुछ कह रहे थे? मालवी तो बुजुर्ग कैसे हैं? अच्छे हैं सर। और आप आप कैसे हैं सर? ठीक है। Madam, what happened? Sir, actually some network error is right. Okay, sir got disconnected. He suddenly got disconnected, so he is trying. Okay. Please go ahead. Actually, I have connected with Dr. G.D. Gupta, sir. He is trying to connect because of some server problem and technical issues. He will definitely join within 2 minutes. So please be patient and we will enjoy the session of Dr. G.D. Gupta, sir. Very soon he will join. So after this session, we have another session at 2:30 p.m. also from the international keynote speaker from Libya. So I requesting each and one and all. So please join at 2:30 p.m. also for the next session. And tomorrow we have another session of Dr. Sally Zahabi from Egypt. Dr. G.D. Gupta sir is joining soon. So if any participants or the eminent teachers or mentor, if they want to share something about the theme of that particular e-IFDP, they can share meanwhile.
I just want to tell Anand Bele sir, it is already being aired on the YouTube. The link has been shared with you all, I think so. And if you are not having link, I will share it with you. I am admitting Professor J.D. Gupta sir now. Welcome once again, sir. I think his audio, sir. Yes, yes. Now he has connected, sir. Sir, welcome back, Dr. G.D. Gupta, sir. Sir, unmute yourself first. G.D. Gupta, sir. Sir, you have a mute. Yeah. Sir, unmute yourself. Okay. Yes, yes. Yes, sir. Welcome back, sir. Thank you. Thank you. Sorry for disturbance. No issue, sir. Now I It am happens. audible. Nothing in our hands, sir. It's a technical issue. Yes, sir. You are audible, sir. Okay, so I just go to this is the third point. Research is based on logical reasoning and involve the concept. So this is the another important part, and data or knowledge that is drive is in real time from actual observation. So what I feel that number of time we feel that what is the actual and real time, there is the number of the difficulty and number of the things it may be take place when we start our PhD. So real time is the one of the most important things. How do we can manage depth analysis of the all data collected, and there are no abnormality associated with. Already I have mentioned that we need to the moral ethics anomalies. This is the one of the most important thing, because when we are the talking about the reproducibility of the data, then I hope that it is the very negligible. So dear gentlemen, if there is the minimum or there is the no anomalies, then we can say it is reproducible. Research creates a path for generate the new question. Existing data helps the create more opportunity for research. Research is a analytical in nature, and there is the no ambiguity in the interference. Accuracy is one of the most important aspect of the research. But the number of time I feel that, let us consider if you are even preparing the standard curve and you are using the 10 ml volumetric flask. What happened that you are using so many types of the volumetric flask, 2 ml from one batch, 2 ml from two volumetric from other batch. They are not calibrated. So we need to all each and everything. We must be tuned with the glassware, chemicals, working place, and instrument, and we need to be justify each and everything. The information that is obtained should be accurate and true and its nature. The laboratory provide a control environment to collect the data. As you know that you most of the person know very well, Professor Saranjit Singh ji. He is the working only and only stability, and also is the working on the impurity. If you can talk, if you can discuss only this topic, then he can we give the so many important information related to all these things. And I asked number of time, let us consider, I am using the machine in the Chandigarh, and the same machine is the shifted from Chandigarh to the Moga. What happened that? He just mentioned that he is again to the validated. Otherwise, there is the number of things in the variability and number of things it may be take place. आज हम यहाँ पर नीतीश जी एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. यहाँ पर बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये दे जस्ट वांट टू गिव द आंसर, उसका आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जोधपुर में एक कचौड़ी बनती है और एक मिर्ची बड़ा बनता है. कचौड़ी और मिर्ची बड़ा बनता है. इट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है. एक उदयपुर के, ट्रू घटना बता रहा हूं मैं, एक उदयपुर के व्यक्ति ने सोचा कि जो जनता स्वीट, जो कचौड़ी और मिर्ची बड़ा, इट इज द वेरी फेमस इन जोधपुर, व्हाई नॉट टू एस्टैब्लिश इन द उदयपुर. व्हाट हैपेंड दैट, जो कारीगर वहां बना रहा था, उस कारीगर को वो लेके आया और उसने उसको बनाना चालू किया. तो उसके टेस्ट में
देयर इज द लॉट ऑफ डिफरेंस, टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। देन ही फील दैट कि अरे यार ऐसा करते हैं, जो मिर्च मसाले जो ये यूज करता था इसमें वो सारी चीज ले आया, जो मिर्ची यूज करते थे वो आया, जो आटा यूज करते थे वो आया, एवरीथिंग, इवन ही आल्सो इंक्लूड द वाटर, ही इज द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम जोधपुर टू द उदयपुर, लेकिन उसमें टेस्ट वो नहीं आया जो कि जोधपुर से उदयपुर में आना चाहिए था। आई वांट टू नो दैट उसको क्या और करना चाहिए था, देन वी कैन मैच द टेस्ट। अगर कोई बताना चाहते हो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू, बिकॉज दिस इज इटसेल्फ ए बिग रिसर्च, नॉट ओनली द स्मॉल, जो एक करोड़पति एक इंटरप्रेन्योर हो, बहुत अच्छा इनोवेशन स्टार्टअप हो, जिसकी एक प्रोडक्ट ही करोड़ों रुपए का बिजनेस देता हो, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सो जेंटलमैन, तो उसको क्या और करना चाहिए था कि जो टेस्ट जोधपुर में है वही उदयपुर में आ जाए। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? और अगर नहीं पॉसिबल है तो क्या करके पॉसिबल हो सकता है? कोई बोलना चाहता, कोई स्टूडेंट, एनीबॉडी, इफ यू वांट टू गिव द आंसर, सिंपल ऐसे ही। निहारिका जी कुछ कहना चाहती हैं, कहना चाहती हो निहारिका जी कुछ? ऐसे ही, दिस इज वेरी सिंपल। नहीं Yes. बोलिए, if anybody is interested or if they know वो about कहना something. चाहता हो तो आज आप देखिए, आई एम वन ऑफ द पार्ट, मैं उसका गवाह हूं। तो आप ये बताइए, मैंने आपको कहा जो कढ़ाई, जो करछली, जो जितने भी हमारे स्पाइसेस, आटा और जो उसमें आलू, एवरीथिंग इज द सेम, इसके बाद भी टेस्ट नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? क्या ये रिसर्च का विषय नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली दैट्स वन। और जो विषय था, वी कांट चेंज द एनवायरमेंट, तो नहीं ला सकते जेंटलमैन। Yes, sir. वो एनवायरमेंट, वो ह्यूमिडिटी, वो टेम्परेचर, वो वर्किंग कंडीशन हम नहीं कर सकते। दैट इज वाई वन ऑफ द साइंटिस्ट जो एक ही टॉपिक पर काम करते हैं, अपने जीवन भर कर रहे हैं, इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर हम सोचते ही नहीं है। इफ यू कैन ट्रांसफर ऑफ द मशीन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, व्हाट हैपेंड इन देयर चेंज, क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गए हैं, वेरिएबिलिटी हो गए हैं, देयर इज द कोई परवाह ही नहीं करते। बिकॉज वी आर द वर्किंग सम ऑफ द NAVL लैब पर जब हम काम करते हैं, एंड देयर जब उसका एवेल्युएशन होता है, यू नो दैट वी आर यूजिंग अवर सिंपल बैलेंस बॉक्स एंड वी आर यूजिंग सिंपल अवर इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जो कि हम 1.5 लाख का खरीदते हैं, 0.1 mg सेंसिटिविटी का खरीदते हैं। हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी ईयर्स यू आर द कैलिब्रेटिंग, कितने दिन में उसको कैलिब्रेट करते हैं? पीएच मीटर कितने दिन में कैलिब्रेट करते हैं? व्हाट इज द ऑफिशियल गाइडलाइंस? हमारे यहाँ पर अगर सॉल्यूशन बना हुआ है, बैलेंस लगा हुआ है, every month need to be calibration, not only calibration by the simple person, we need a expert person to calibrate it. Otherwise, because we are the testing of the product which are related to the industry, it cannot be give the same reading, and it is the number of time it can give the long variability. Gentlemen, सारा कुछ बैलेंस का ही तो खेल है। जो आप पॉलीमर यूज कर रहे हो, क्या अंदाज से डाल रहे हो? ये घर की सब्जी नहीं बन रही है कि दादी बहुत एक्सपर्ट है, 5 किलो की सब्जी तो भी नमक डाल देगी बिना नाप तोल करके, या कुछ मसाले डाल देगी और इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द रिसर्च, एंड दिस रिसर्च, this product for the human being, it is not to the equipment, it is not the machinery, so that we can say it is suitable to each and everyone. It is required a standard and specific value. That is why calibration, so that I have mentioned, laboratory provides a control environment to collect the data and the specification of the equipment. One of the scientists over here, let us consider, if you want to purchase one of the UV spectrophotometer, and same UV spectrophotometer, if the purchase by the industry, what is the difference? Because UV is the same, company is the same, specification is the same, even that there is a lot of difference, because company peoples, they can't purchase such types of the UV without the excellent calibration parameter. और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानने लगते हैं कि हमने निगोशिएट करके उससे 20,000 रुपए कम करा लिए, उसने 20,000 में 3 चीजें खराब कर दी, क्योंकि दे वांट टू प्रोड। ये मेरे दिमाग में कैसे आया आज की डेट में, व्हेन वी आर द परचेजिंग, वी वांट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, ये कैसे आया? वी आर द वर्किंग इन द, एक हम मॉल पर गए और वहां पर अरिस्टोक्रेट, सफारी, सो मैनी सूट केसेस थे। सेम सूटकेस जब एजेंसी पर देखा, देयर इज द बिग डिफरेंस। ओके, 10-20%, दैट इज ओके,
When I talk one of the person is the well known to me कि gentleman how it is possible, आप तो हमारे relative हो, जानने वाले हो, so what is the difference? तो उन्होंने कहा even these types of the product generated in the law in the big lot for the Walmart or for the big agencies, there is the difference in the quality. यही कारण है कि कोको कोला अमेरिका में बिक रहा है और इंडिया में बिक रहा है. There is the lot of difference. Who is the responsible? Is not say that this tablet is for the blaze peoples and this tablet for the city peoples. This is possible? It is not possible. So we need each and every time of the excellent standard value. So because this is related to the research program, we need to justify it. Accuracy measured in the instrument, calibration of instrument, tools, and the final result of the experiment up to the mark. मैंने क्वेश्चन कुछ इसमें लिखे हुए हैं, आप भी इसमें सोच सकते हैं, इनकी कॉपी कर सकते हैं. बिफोर टू स्टार्ट एनी वर्क इन क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सोचिए. हु इज इट फॉर, जो आप ले रहे हैं, हु इज फॉर व्हाट पर्पस, व्हाट विल इट डू, जो आप रिसर्च टॉपिक लिया है क्या करेगा आपके लिए, विच आर द पोटेंशियल मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट, फॉर व्हाट पर्पस, only for the just only for sake of degree. Not only this, gentlemen, we need to what is the market value, what is the social importance, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, इट कैन बी गिव. आपको एक बताया, मेरे पास एक इंडस्ट्री से फोन आया कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, यू नो दैट हमारी कंट्री में 330 ऐसे प्रोडक्ट हैं. वी आर सेइंग दैट वी आर थर्ड इन बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड. एवरी वैक्सीन जो यूज हो रही है कंट्री में, वी आर द किंग. हर तीसरी टैबलेट पर हमारा नाम है. जब इतना सब कुछ है, देन व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्री. 80 ऐसे इंटरमीडिएट हैं जिसके बिना हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी काम ही नहीं कर सकती है. नाउ अ डे नंबर ऑफ द पर्सन दे आर वर्किंग ऑन एनी यूनिक फीचर्स. क्या यूनिक फीचर्स ला रहे हैं, व्हाट इज द यूनिक फीचर्स. जब दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट जवाब क्या देता है कि इस पे पहले किसी ने काम नहीं किया, दैट इज व्हाई आई एम सिलेक्ट. अरे काम क्यों नहीं किया, नीड द रीजन. तुम क्यों कर रहे हो, नीड द रीजन, so that you can justify the value. And is there enough demand, why will they buy it your product, why we can allow to you, what is your motivation for the doing it, what are the thinking about the product and services, how simple and complex will the idea of the education. Number of time we are using highly and very costly you can say polymers or the technique. That is why we are the dependent on the other country like a China, because they are producing very economic mode and we put our level and send it. So what are the risk factor involved in your idea and how soon could we idea be put into the operation? कब आ सकता है operation में? What is the break even point and estimate time to the framework of your research? Having deducted cost and can make one product. आज पूरी कंट्री में एक ही बातचीत हो रही है और वो बातचीत हो रही है हाउ वी कैन यूटिलाइज बेस्ड प्रोडक्ट. बिकॉज जो हमारा बेस्ड प्रोडक्ट निकल रहा है उसको कैसे यूज करें, उसको कैसे डिस्कार्ड करें. even that number of the peoples is the working that. Let us consider if you have the 30 pharmaceutical companies, 40 pharmaceutical companies, and they are producing 10 types of the antibiotics. When the machine is the cleaning and wastage of the antibiotic, where it can be gone? It can be gone in the, you can say, in the soil. So what happened there? How we can the discard it like that? And number of time it can be create some of the serious problem in the animal, in the human being, and so many types of the. So one of the things is the economization, because how we can reduce the cost, how we can increase the yield value of the product. So these types of things are the important. How much investment would we need to commercialize the idea? Because after completion of the research and work, everybody want to that. What is the commercial value? Either it can be to the next person they can be do, but what step you can left so that another person can to take it up to the commercial concept. How would raise the balance fund required? What is the another support and part? एक फंड की बात ही नहीं करते, कोई बच्चों से आप करें what is your budget of your project. This is very important like that. Why are the best suited person to execute this idea? Who will help to you? Let us consider I am pharmaceutics person. If any chemistry person just asks to me, sir, I want to PhD with you, I can say that's okay.
Even I don't know what is the concept of the synthesis, but I accepted because I want to increase one of the PhD person. So this is again need that if you are not expertise, you are required to give the correct direction to your student so that they can be come to know what is the need and how they can fulfill the requirement. What are the capability of the team in finance, sales, marketing, operation, and technical knowledge? Because I have included the number of the parameter is the here, because innovation, startup, or in those day, entrepreneurship is the main concept of our government of India, industry, research, everywhere they want, you can do only n small bar. This is the most sufficient. How do you intend to protect your idea? I want to include here one of the simple example. When I was attending one of the meeting, that यहाँ पर काफी लेडीज बैठी होंगी, जेंट्स सभी, जो हाथ चलाने वाली मशीन होती है, दिस इज द सिंपल मशीन। और उस मशीन में जब रील से धागा जाता है, एक ऐसा लगा होता है, 3-4 जगह से जाकर के फिर नीडल में जाता है। वेर यू कैन स्टार्ट, जब इसको हम चलाते हैं तो धागा टूट जाता है। क्यों टूट जाता है धागा भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है, फिर सुई में धागा को परोना है, फिर इतने सिस्टम से लाना है। बिकॉज व्हेन यू कैन स्टार्ट इन द फास्ट स्पीड, जब तेज चलाते हैं धागा स्पीड से निकलता है, उतनी रिक्वायरमेंट कपड़े के साथ होती नहीं है और वो उलझ जाता है और टूट जाता है। व्हाट हैपेंड दैट? तो क्या हुआ इसमें? रिसर्च कहां से आ गई? एक व्यक्ति ने प्रोजेक्ट सबमिट किया, ही डेवलप वन ऑफ द रील, कि कितनी तेज चलाए मशीन, कितनी धीमी चलाए, बट द मोबिलिटी ऑफ द थ्रेड इट विल बी द सेम। जेंटलमैन, 25 लाख का मेरे सामने सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट, 25 लाख का। और आज कुछ दिनों के बाद वो सिंगर मशीन, उषा मशीन, दूसरी कंपनी उसको खरीदेंगी। ये आइडिया है, ये रिसर्च है कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट कि यू कैन डेवलप द प्रोडक्ट, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हाउ यू कैन रिजॉल्व इट। जब हाथ से चलाते थे तो पैर वाली आ गई, अब हाथ और पैर दोनों छोड़ दी, इलेक्ट्रिक आ गई। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द मोड। बट आज भी उसका सॉल्यूशन नहीं था कि जो धागा फंसता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बिकॉज thousands of the workers, they are the working in the industry. अगर एक वर्कर का धागा फंसता है, it will take 2 to 3 minutes, जो बेस्ट होता है, कंपनी की कॉस्ट आती है। some of the survey like that कि how you can shift your product। आपको एक एग्जांपल यहाँ और देना चाहते हो, एक आया था हीरो होंडा का, एक आइडिया आया था, बिकॉज सम ऑफ द केस स्टडी भी इसके साथ डिस्कस हो जाती है। उसका ये था कि आज आप देखिए मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते हैं, व्हाट हैपेंड दैट, वो पूछता है पप्पू 18 नंबर चाबी ला, अब पप्पू चाबी ढूंढ रहा है, वो बैठा हुआ है। तो दिस टाइप्स ऑफ द थिंग्स इट विल बी द हैपन कि हाउ वी कैन वेस्ट अवर टाइम। ऐसे ही हीरो होंडा का है कि जिस वो चेयर पर बैठता था और जो स्टैंड था उसको 6 इंची ऊपर बढ़ाने के बाद व्हाट हैपेंड, एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन इंक्रीज 20% to 30%, बिकॉज जब वो उठ के चाबी को उठाता था और फिर आता था, अब उसमें पुश बटन है कि वो सारी चीज उसकी सिटिंग कैपेसिटी में दे कैन बी अरेंज एंड ऑर्गेनाइज इट। सो nowadays in the same thing is the required in the institutional research। डिस्टिल वाटर तीसरी मंजिल पर, स्टोर चौथी मंजिल। एक दिन में एक स्टूडेंट ईमानदारी से आप सभी लोग जवाब दें कि व्हाट इज द टाइम दे आर वेस्टिंग ओनली कलेक्टिंग द मटेरियल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल। समय तो 8 घंटे ही है ना जेंटलमैन। सो दैट इज वाई एक अच्छी गृहिणी किचन में तभी काम कर सकती है जब एवरीथिंग इट विल बी द वेल ऑर्गेनाइज। कढ़ाई चढ़ी हुई है और वो क्या ढूंढने में लगी हुई है कि हियर इज द जीरा, ये जीरा डिब्बा नहीं मिल रहा, तो या तो गैस खराब हो रही है, ऑयल खराब हो रहा है, लाइक दैट। सो रिसर्च इज वन ऑफ द परफेक्ट किचन। You can organize, you can manage each and everything in a justified point so that you can increase your efficiency, you can increase your potential value in the terms of the research। आत्मनिर्भर सेल्फ फाइनेंस आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दिस इज कोटेशन, बचपन से लेकर के आज तक हम पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही रहते जाना है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जेंटलमैन, व्हाट इज द नीड? This is very, very important. We need to discuss, we need to ask, we need to judgment. What is the need of our society? What is the need of one pharmaceutical company? What is the need in the research part of in a particular dosage form? How we can justify? I already mentioned economic mode, yield value, application, delivery, everywhere this is the research and research parameter take place.
लोकल टू ग्लोबल एंड लोकल टू वोकल। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, ये तभी सिद्ध हो सकता है व्हेन वी आर द वर्किंग। आज हम क्या करते हैं कि जब हमारे लिए है देन वी आर द वर्किंग ग्लोबल इंटरनेशनल। कहाँ का ब्रांड है? इंटरनेशनल। देयर इज द प्रॉब्लम, समथिंग इज द नेशनल, बिकॉज we are not to the local for vocal. We need to the local to the vocal so that we can justify our work. Types of the research method, I don't want to take the more time. Basic research, scientific research, applied research, problem oriented research, problem solving research, qualitative research, quantitative research, architectural research, demographic research, exploratory research, descriptive research, and explanatory research. These types of the research we are performing in our different field, not only pharma. So number of things in those days also applicable in the pharma. It may be the basic research, scientific research, and applied research, problem oriented research, problem solving research, qualitative, quantitative, up to these 5-7 parameters. We are performing the research work in the field of the pharmacy. Stage in the research process, इसको सिंपल बता देते हैं, because number of the students they are the also attending, so that it's the helpful to the student. Identify the problem, reviewing the literature, setting research question, rational, objective, and hypothesis, choosing the study design and protocol, timeline, and the short analysis, material and method selection, parameter variables, and data collection, data processing. I will discuss in the another slide in the complete. So now in the next part, we want to include and justify these heading what we have selected. So first one, identify the problem. This is one is the very important thing, how we can select the topic and what is the criteria of the selecting topic. So the first and foremost task in the entire research process in the scientific research is to identify a research problem. At what problem do you want to work? So a well-defined problem will be lead the researcher to accomplish all important phases of the research process, starting from setting objective to the selection of the research methodology. So there is the two method. One is the non-research problem. Another one is the research problem. Now, everybody asking non-research problem, what is this? Gentlemen, ये मैं आपको बता दूं, आज 70% peoples they are working on non-research problem. पेपर पब्लिश हो जाता है, सब हो जाता है, and they can say that I am working on this one. वो आपको बताते हैं कैसे होता है. Non-research problem is one of does not require any research. फिर भी हम research करते हैं. To arrive at a solution, a non-researchable problem consists of vague detail and cannot be resolved through the research. It is a managerial or built in the problem that may be solved at the administrative or managerial part. So outbreak, let us consider, I have here taking the 3 examples. जरा ध्यान से सुने. Some places the cholera can be spread. And what is the cholera and how it can be spread? Reason पता है. What we are doing the research, because there is the flood and a common phenomena of any community. It can be spread because the lot of water for the long time it can be there. What number of people they can be start the research. ये third है, यहाँ पर देखिए, hospital treated a large number of cholera cases with the penicillin. What the treatment of with the penicillin was not found to be effective. We are without learning that key penicillin it can be effective or not effective, but we are the using. What happened that do we need research to know the reason? There is the no single reason that Vibrio cholera is not sensitive to penicillin. ये दिया हुआ है, फिर भी हम प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं, फिर भी हम मॉडिफाइड पॉलीमर लेकर के बनाने जाते हैं, फिर भी हम नेचुरल पॉलीमर लेकर के बनाने से लग जाते हैं, हम एडिटिव्स को मॉडिफाई करने लग जाते हैं, बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस वी आर सिलेक्टिंग दिस वन. जब तक काम खत्म हो जाता है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द डिजीज, because we know that it is not effective for the particular concept. So this is the only non-researchable problem. Let us consider number of the problem. We know that how it can be resolved, and the problem of the resolve that कि हम punishment की तरफ जाते हैं. Let us consider, मैंने एक पराली का एग्जाम्पल दिया. किसान की प्रॉब्लम है कि पराली को खेत से निकालना और नए तरह से खेती करना.
हमारी प्रॉब्लम है कि स्मोक हो रहा है, हम स्मोक को खत्म नहीं कर सकते, हम पराली का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लगाइए। सो दिस इज द, इट इज ए विषय है कि हाउ वी कैन डू इट। हम क्राइम की तरफ मूवमेंट करते हैं, हम हमेशा ये कार्यक्रम चालू करते हैं कि पेनल्टी लगाइए, पनिशमेंट दीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट रिसर्च। सो अनदर एक बीच में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। They found that 1,000 women we are continuous using the contraceptive pills, but last month service statistics indicate that none of these women were using the. अब जो लोग थे, जो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बहुत सारे इसमें पॉइंट क्या काम चालू किया कि देखिए जिस कंपनी का कंट्रासेप्टिव इसमें बिक रहा था वो सुटेबल नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट, तो क्या करें, न्यू कंट्रासेप्टिव लॉन्च देयर। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या थी वहां पर, in a particular area, why they are not using? Well, the fact is the monsoon flood was prevented, all new supplies of the pills and all old supply were have been the existed. Thus, although the problem situated exists, the reason for the problem is already is the non. Non region के बाद we are launching the new product for women and for the men. इसकी एक लॉन्ग स्टडी आई है, एक स्टेट का नाम दिया हुआ है, व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इस पर पेपर दिए हुए हैं कि हाउ दे कैन बी स्टार्ट द न्यू वर्क टू डेवलप दिस टाइप्स ऑफ द थिंग। सो रिसर्च प्रॉब्लम इज द प्राइमरी कंसर्न। अब दूसरा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव टू डिसाइड। सो रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द प्राइमरी कंसर्न टू अ रिसर्चर, a researcher problem is the perceived difficulty, feeling of the discomfort or discrepancy between a potential research problem. This implies that there should be a difference between what exists and ideal for the plant situation. है क्या पहले, अगर इसका अध्ययन नहीं किया, you first know that what is the existing solution of this disease. देखिए चार चीज हो सकती हैं जो फार्मा में हम बात कर सकते हैं कि one is the drug selection, another is the polymer selection, technology selection, या route of administration, या आपका न्यू टेक्नोलॉजी पर हम काम, तो 5-6 प्रकार से हम सिलेक्शन करते हैं। बट वी एवरीथिंग इज द ओके, व्हाट हाउ वी कैन सिलेक्ट। सो फर्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट कि सिर्फ इतना कहना कि ये है नहीं इसलिए हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एंड व्हाट इट कैन बी ओवरकम द प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको ओवरकम कैसे करेगा, एंड आइडियल और प्लांट सिचुएशन इट इज द इफेक्टिव। Why the discrepancy exists, ये क्यों हो रहा है ऐसा, it must be know that this implies that the reason for the discrepancy is unclear to the researcher. So I request to a researcher, first you can clear the what is the existing is going on. So there should be at least 2 possible answer or solution to the question or the problem. जो मैंने आपको simple I just want to the example common to the here कि we cannot to go through the punishment, we need to the solution, and solution always start with the existing problem and how to resolve it. मैं इस चीज को यूज करना ही चाहता हूं, what this is the existing problem and this is the solution to resolve it. It will not be to be the costly. Let us consider everybody want to the use purified water. हर व्यक्ति को प्योर वाटर पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो जो शुद्ध पानी है, जो प्यूरिफाइड वाटर है, वो 500 रुपए का 1 लीटर है। कितने लोग पीना चाहते हैं स्क्रीन पर बैठ करके, कितने लोग चाहते हैं आई वांट टू यूज द 500 रुपीज 1 लीटर वाटर बिकॉज आई वांट टू द प्योर वाटर। 20 रुपए की बिसलरी आने लगी, 10 रुपए की आती थी, तो व्हाट इज द नीड, हमारी बॉडी के लिए जरूरत क्या है, व्हाई वी आर इंक्रीजिंग कॉस्ट 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 है कॉस्ट। तो व्हाट इज द नीड ऑफ आवर बॉडी कि हम 300 ppm का वाटर वी कैन यूज एंड वी कैन सर्वाइव, वी आर द फिट, देयर इज द नो प्रॉब्लम। We can reduce the pp up to the 50, then what happened in our immunity, what an system it can be suitable to me or not suitable to me. So number of time this types of the question arising surrounding and everywhere, and number of the people's asking that at what level we need to the purification of any product, so that without reducing the cost it can be converted in the form of the suitable to the human being. So this is very important. We can think over it and work on it. So choice of the research problem is not as easy as it appears.
it is generally guided by the researcher own intellectual orientation. Number of time I feel that some of the students, they have the very logical brain to resolve the problem. So we can discuss, we can talk what is the actual, this thing is the going on, how to resolve it. Level of the training, experience, knowledge on the subject matter, intellectual curiosity, that is why it can be resolve the problem very easily. So theoretical and practical consideration also play a very important role in the selection of the topic and selection of the problem or the idea which are required for the research. Now, other issues of the problem related to the, this is the pilot survey, case study, focus group interview, experience survey, thrust area of industry, need of the society, problem in the existing product. Like that, we can consider all parameter before to this. Now, review of literature. In those days, what I feel that जो मेरा अनुभव कहता है कि we are too much lazy in the review of the literature. ये बहुत 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 बड़ा ड्रॉबैक हमारे सिस्टम में आता जा रहा है कि हम एक या दो पेपर उठाते हैं and we can start the research. What is the importance, the national and international? What is the going on? Without knowing that, we can start. So I request to all of you, all the gentlemen, it is essential that we first to give the at least 1 to 2 or 3 months so that we can very rich with the literature survey. And literature survey, you can select the 5 to 9 or 7 keyword. On the basis of the keyword, you find out that what types of the problem is resolved by various scientists. They are working in the India or in the abroad, like that. So a review of relevant literature is the integral part of the research process, and it's enables the researcher to formulate the problem in the terms of the specific aspect of the general area. So literature survey is one of the very important and key point of any researcher. So gentlemen, at least 10-year papers we need to collect, we need to study. On the basis of the literature, we are moved toward the problem and we can justify our idea why you have selected this problem. What is the utility of this problem in the society, in the Eastern industry, in the academia, and how we can start our work so it can be very helpful to each and everybody. Review the literature helps to avoid the duplication of the work, because I know that in those days the some of the criteria, our government agencies, our some of the professional bodies, they are working to reduce the duplication. I know that how many person they put their idea on their website. There is the very only a few of the institute they have put their idea on the website. So number of time duplication problem maybe take place. It helps the researcher to find out what other have learned and reported on the problem. दूसरे लोगों ने क्या किया, क्या रिपोर्ट किया, ये हमारी प्रॉब्लम में कैसे हेल्पफुल हो सकता है. It's help the researcher to become familiar with the type of methodology allowed to the other. So these are the some of the review point of the literature we can go through, and it can be help to give the excellent idea of the researcher. ये हमने बहुत important है कि before to start this, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और इन 3 चीज को जो justify कर दे, you will be the perfect. One is the rational, objective and hypothesis. It means rational means तर्क क्या है आपका रिसर्च के पीछे, ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द उद्देश्य, और हाइपोथेसिस जो आपने परिकल्पना की है इसको रेजोल्यूशन के लिए, वो क्या है. इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी कहा है, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम आई फील दैट कि दिस इज द लैंग्वेज विदाउट जस्टिफाइंग of your rational, without justifying what is your hypothesis of your work, without knowing what is the aim and objective of the work, we can start the work. After a long time, I feel that this is not justified. So after discovery and defining the research problem, researchers make a formal statement of the problem leading to research objects. So first क्या होता है, rational, on the basis of the literature, on the basis of the theoretical, practical, observational experience things you can justify accordingly. So what is the missing and what are the open question of the study? Identify the gaps in the literature and emphasize why it is important to address those gaps and how it can be fulfilled. Let us consider if any antibiotic का जो मैंने example दिया,
If it is not suitable for the particular disease, then this types of the antibiotic the suitable. But this types of the antibiotic, it can be create the problem in the stomach. So what types of the problem it can be create and how we can reduce? Where is the absorption? It can be oral absorption, it can be small intestine, large intestine, and where it can be absorbed, so that we can give the rational form of the selection of your problem. And objectively, we precisely say that should be researcher to delineately the types of the info that should be collected, provide a framework of the scope of the study, the best expression of the research objective, well formulated, tested research with the hypothesis. So hypothesis, अब जब आपके पास कोई परिकल्पना होती है, आपको एक एग्जाम्पल ये बताते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हाउ देयर इट कैन बी टेक प्लेस। आप सभी लोग ट्रेन में यात्रा की होगी और जो ट्रेन के पीछे दो ऐसे शॉकर लगे होते हैं, ये शॉकर जो लगे रहते हैं किसी का अंदाज नहीं होता है गोले गोले से क्या लगे हुए। तो एक समय एक स्टडी हो रही थी कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द ट्रेन एक्सीडेंट। इवन जब एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे को तो पूरी ट्रेन में धक्का लगता है, कोई बंदा बैठा है, उसे नहीं पता व्हाट इज द गोइंग ऑन, बट व्हाट हैपेंड दैट। तो एक उस बंदे ने सिर्फ माचिस का एक पीस लिया, एक मैच बॉक्स लिया और उसको खिसका करके मैच बॉक्स को आधा खोल दिया। जब मैच बॉक्स में एक फोर्स लगाया और वो फोर्स अगर अंदर चला गया तो इट कैन बी रिड्यूस 30 to 40% ऑफ दी फोर्स। यानी कि अगर आप क्रिकेट का देखें, आप कैच पकड़ते हैं और अगर आपको हाथ के पीछे ले जाते हैं तो जो इम्पैक्ट ऑन द हैंड इट कैन बी रिड्यूस। हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी रिड्यूस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस कंसेप्ट पर एक जनरेट ये हो गया। आप सभी लोगों ने लिफ्ट का यूज किया होगा। लिफ्ट में आप देख लें इनसाइड ऑफ द लिफ्ट एक बहुत बड़ा खड्डा होता है। व्हाट इज द यूटिलिटी? This is a natural soccer. So after that study, anyway, sometime it can be technology, it can be failed, and it can be come to the fall down very very smoothly, or you can say on a free fall. What happened? आदमी मर जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो खड्डा होता है जब उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, इट कैन बी एक्ट एज ए नेचुरल शॉकर। तो ये रिसर्च बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि कुछ चीजें हम किस तरह से विदाउट मॉडिफाइंग द टेक्नोलॉजी हाउ वी कैन द चेंज। इन द सेम थिंग इज द हियर कि व्हेन वी डिफाइन द हाइपोथेसिस कि पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद कितनी देर बिठाना है, बैठ के ही डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, इस चीज का कितना इफेक्ट होता है। सो दैट इट इज वेरी 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 यूजफुल हाउ वी कैन एडमिनिस्टर, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दिस थिंग। इन चीजों का कहां फर्क आता है उसको देख से। चूज द स्टडी डिजाइन एंड प्रोटोकॉल, टाइमलाइन एंड शॉर्ट। तो जो डिजाइन है आपकी प्रोटोकॉल, यू कैन डेवलप इन द 2 to 3 pages so that we can come to discuss it. What is the availability in the inside? What is the required the infrastructure or facilities from the outside? This is again very important. You can draw a very very specific timeline. And I have mentioned especially one of the very important word and point number of times short. So what is the strength of your project? What is the weakness? What is the opportunity? And what is the thrust? Threat means होता है what is the difficulty, क्या क्या हमें आ सकती हैं, how we can resolve. If we can write down these 4 points and put the value, this is the strength. We have this types of the facility inside the institute, this types of the value in our surrounding, we can do it. What is the weakness, what we need to the opportunity from outside the institute, like that. Material method selection, various parameter, number of time I have mentioned in some of the lecture that in those days presentation is the one of the very important, and selection of the variable. What types of the selection है? Effect of temperature, effect of pressure, effect of concentration of polymer. एक fashionable, मैं जब PhD कर रहा था and I meet to, आज वो हमारे बीच में नहीं है, प्रोफेसर गोयल, he is from अहमदाबाद। जब मैं उनके पास गया, सर I want to the work on this topic and I want to need your help. I did my PhD from INDORE, but कुछ चीजें थी जो हम उनके पास जाकर के कहे थे, this is the related to the CAD, computer aided drug design based जो सिस्टम था, काइनेटिक का जो फर्स्ट टाइम वहां पर डॉस कमांड पर वो कर रहे थे, जब मैं फोर्ट्रान लैंग्वेज पर उन्होंने डेवलप किया था, आई मेट देम, तो उन्होंने एक ही चीज मुझसे कही, डॉक्टर गुप्ता डू यू वांट टू वर्क ऑन द फैशनेबल? तो मैंने कहा नो सर। बोले देन आई एम सुटेबल टू यू,
because I am not working on the fashionable लाल पीले चित्र बना के मैं काम नहीं करता हूँ. Unable to understand what is the utility. If any student is using any software, any machine, he must be know that what is the utility and what things we can change, how it can be convert, how it can be modified, and what is the thing. मैं ये कभी नहीं कहता हूँ यूज नहीं, 100% यूज करिए, but we always say that without knowing that the application कहीं ना कहीं आपका फंसना तय है. Either in some of the interview, after all क्या होता है, when we are the just the face of the interview, बच्चे का वाइवा ले रहे होते हैं और पूछने लगते हैं ये मशीन पर आपने काम किया है, वो कहता है यस किया है, व्हाट इज मॉडल, उसे मॉडल पता नहीं होता है. व्हाट जब हमें ये लगता है नहीं किया तो वी कैन आस्क इसकी शेप साइज देखी है, तो जो दिल करता है उसका इतनी मशीन को इतना बड़ा बता देता है, इतनी बड़ी मशीन को इतना छोटा बता दे, बिकॉज he is not even checked that what types of the equipment they are used in this one. नॉन लाइसेंसिंग का सिस्टम, वायरी सिस्टम की बस आप अपना सिस्टम भेजिए, एचपीएलसी करा लीजिए, एचपीटीएलसी का, दैट्स ओके, बट यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द एप्लीकेशन, दिस टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट दे हैव यूज्ड, उसका मॉडल क्या था, उसमें उन्होंने सॉल्वेंट सिस्टम क्या लिया था. दिस इज अनदर पार्ट एंड इंपॉर्टेंट, सो वी मस्ट द डिजाइन accordingly because this is very very important in the research. We must to decide our very well why we are selecting these 5 very well. Data collection is the another important. कहीं भी डेटा को लिख देना उचित नहीं है, उसको आप जस्टिफाई करें. डेटा प्रोसेसिंग, नाउ how we can data present in the form of the table, in the form of the graph, in the form of the some of the other manner, so that we can justify. ऐसा नहीं है अरे यार टेबल नहीं है टेबल बना देते हैं, फ्लो डायग्राम नहीं है फ्लो डायग्राम. व्हाट टाइप्स ऑफ द नीड योर रिसर्च to present data processing system, data analysis, pharmacokinetic study, biostatics, statistical manner, and you can justify कि आपको काई स्क्वायर लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, एनोवा लगाना है, क्या लगाना है, क्यों लगाना है, किस बेस पर लगाना है, कितनी सैंपलिंग पर लगाना है, उसकी साइज क्या है, T1, T2 दोनों लगाना है, नहीं लगाना है. Each and everything you must know it so that you can say it is important. Number of time why I feel that कि even you are representing of the data, it is very very poor. Number of time feel that the melting point is the standard given in the book 230 degrees Celsius. बच्चा क्या कर देता है, रिसर्च थियोरेटिकली इतना प्रैक्टिकल कर देता है 232. उसको पूछो यू हैव डिटरमाइन दिस इज द रेंज और द एग्जैक्ट, उसको पता नहीं लगता है. हर चीज में वो स्टैंडर्ड वैल्यू लगाना चाहता है, हर चीज में वो स्टैंडर्ड एरर लगाना चाहता है. व्हाई दे आर द यूजिंग दिस वन, बिकॉज ही नो दैट कि जितना डेटा देते चले जाएंगे हम उतने बड़े साइंटिस्ट हो जाएंगे. सो नॉट अ जेंटलमैन, वेयर इज द नीड ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू, जहां स्टैंडर्ड फिनोमेना स्टैंडर्ड एरर की जरूरी है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नॉट ओनली द डेटा, when you are the using is the dissolution study, you are the kinetic, where is the need of the statics parameter, why you are using selecting on the n equal to 5, why are you selecting n equal to 3, y equal to n equal to 8, in which study you are performing. That's one. Number time of the CPCSE committee, it was observed that student unable to understand why we are selecting, इतना कहा है इसलिए हम ले रहे हैं. सो ये उचित नहीं है. फॉर दिस पर्पज वी नीड टू द वर्क ऑन इट. हमारी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन इट विल बी इन द शार्प मैनर, नॉट टू दैट मोर देन, हाईएस्ट, satisfactory, very good. These terms not to use in the conclusion. You need to the specific how much, because you are the database. आप quantitative research कर रहे हैं, qualitative research नहीं कर रहे हैं. So quantitative research needs कि how you, if you are the comparing your data with the market or existing product, so you need to what % of the variability in their specific region. Not that कि बस ठीक है, it is the excellent, it is the more, it is the very satisfactory, ऐसे ऐसे term use करते. So don't use this types of the terminology in the writing of the thesis. Another part is the present writing, report and thesis itself, it is a complete topic. So I don't want to touch it because most of the things and specification is the given. Gentlemen, don't forget the acknowledgement of your teachers or your person, those who are directly related to the thesis, without any ambiguity, without any, you can say, political manner, and without using your IQ. Because person, it can be directly or indirectly help you. This is our morality to acknowledge this person. And publication itself a complete job. So I don't want to discuss. सिर्फ इतनी चीज कहना चाहता हूँ,
maintain the ethics and moral value throughout the system. Ethics in the research. Ethics refer to well-based standard of right and wrong and precise what humans out to do. So gentlemen, in those days, we are the working on the ethics. आपको ये बता दें कि आर्ट ऑफ लिविंग और जिसको अपन कहते हैं ह्यूमन वैल्यू के कोर्सेज 90% यूनिवर्सिटीज ने कंपलसरी कर दी. Why this is the new? Heartfulness is the compulsory. क्यों करते जा रहे हैं? Because I know that peoples are unable to understand to maintain the ethics and the value like that. So that most of the university, they have accepted as a course part of the human value and it can be given in the starting manner. फिर AICT ने नया term coin किया है, AI initial का induction program. You can organize 1 week, 2 week induction program. You can familiar the student and give the moral value and ethics to the student. मुझे ये सोच करके बड़ा दुख होता है कि आने वाले टाइम में हमारे समाज में एक कैप्सूल डेवलप होगा कि फॉर व्हाट पर्पस दिस इज कैप्सूल. कई बच्चा हंसता नहीं है, इस कैप्सूल को खिलाओ बच्चा हंसने लगेगा. आज हमारे सिस्टम को आज हमें ये बताना पड़ता है कि क्या झूठ या क्या सत्य है. This types of the things is the going on. So आज this is the strong and moral duty of we like a professional, we like a person, we like a teacher. हम सभी टीचर की moral duty है कि we develop our profession in such a manner because I know that 1 mg और 0.1 mg एक जीवन को दे सकती है, खत्म कर सकती है. There is the big difference because human is not a machine. So don't play with this. We are doing the good job. And we maintain the ethics and moral value throughout our life, even in the terms of the research. जो outcome हो, you can give the outcome in a perfect and systematic manner without mixing it in a for the publication of the paper like that. So it seeks to resolve the question of the human morality by defining such concept as a good and evil, right and wrong, virtue and vice, justice and crime like that. The goal of ethics in research is to ensure that no one is the harmed or no one suffer from adverse consequence from the research activity because integrity in the research is vital. Ethical considerations should be given prime importance when preparing research design. मैं अवश्य कहना चाहता हूं व्यक्ति में 2 गुण जरूर होना चाहिए और वो गुण होता है गॉड फियरिंग एंड गॉड फेथ. ईश्वर से डरो और ईश्वर में विश्वास करो. जिस दिन ये 2 चीजें चालू हो जाएंगी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कोई देख नहीं रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं. कोई देखे या ना देखे, यू फील टू द फियर टू द गॉड एंड यू फील टू द फेथ इन द गॉड. उस ईश्वर में विश्वास करो जिस धर्म और कर्म को आप मानते हैं कि what I am doing, what I am saying, this is the truth and nothing to be the ambiguity and no any adulteration and the mixing like that. उस दिन आप देखेंगे हमारे रिसर्च डेटा, हमारे पब्लिकेशन, हमारी बुक्स throughout the country, it can be going on and everybody, they can accept our research. This is the very, very important part. So I hope that this will be the very, very useful to all of you. And I feel that this is our moral duty to individual to work on it. Only 2 and 3 slides, they are not related to topic. We need to the work on the teamwork. आज की डेट की जरूरत है. आइदर इज द सिटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, इकोलॉजी. अगर आप कोई किसी भी विषय में काम करते हैं, फार्माकोग्नोसी, नेचुरल प्रोडक्ट, कहीं भी एनीवेयर यू कैन द वर्क ऑन इट. सो वी नीड टू द वर्क ऑन द टीम वर्क so that we can reduce the gap of the research and we can easily to the succeed our research project and research work in a justified manner like this one. अगर एक व्यक्ति है और उसके पास सुविधाएं हैं, what he can't do it. एक आप सिंपल आप कह दें अगर एक HPLC इंस्टीट्यूट में होने से रिसर्च और बड़े बड़े पेपर हो सकते थे तो बेचने वाला आज बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाता. अगर किताब पढ़ना, जो किताबें हैं कि किताबों के संग्रह से अगर नॉलेज होती तो हमारे दुनिया के सारे लाइब्रेरियन विश्व के सबसे ज्ञानी हो जाते. स्टोर इज नथिंग टू द सॉल्यूशन. हाउ यू कैन यूटिलाइज इन योर लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक पेज भी अगर आपके पास है और उसको आपने पढ़ा है, मंथन किया है, सोचा है, देखा है, then I feel that how it can be useful to your life and how it can be effective. So don't to be किसी से द्वेष और किसी से कि इसका नाम डाल. Either you are taking help of the chemistry person, you can take.
Physics, chemistry, cognosy, because or cognosy, they are the interlinked system. So now need to do to help to each other and work together just like a team. मैंने दो बात कही है, तीन वर्ड होते हैं, एक होता है गैंग, एक होता है टीम और एक होता है ग्रुप. एक खेत में एक ग्रुप काम कर रहा है और रेलवे स्टेशन की पटरियों को आपने लिखा होगा गैंग नंबर 8 काम कर रहा है. और जो हमारे यहाँ रिसर्च में यूज होता है, देयर इज द टीम. सारी चीजों में एक भीड़ है, लेकिन तीनों के मायने अलग अलग हैं. व्हेन वी आर वर्किंग इन द ग्रुप, तो हम वी आर द लॉट ऑफ डेविएशन. व्हेन वी आर इन द वर्किंग इन द टीम, देयर इज द नो डेविएशन. व्हेन वी आर वर्किंग इन द गेम, देयर वी कैन से दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बस ठीक है, हमें गिट्टी डालना है, डालते रहिए. गैंग नंबर 8 डाल रही है. तो देयर इज द डिफरेंस, देयर इज द डेफिनेशन, देयर इज द जस्टिफिकेशन लाइक दैट. यहाँ पर मैंने दो चित्र डाले हुए हैं स्पेशली. डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर ए टेम्पररी कंफर्ट. ये देखिए भाई साहब, इनको सर्दी लगी, ऊपर चढ़ना चाहते थे, टीन उसको थोड़ा और जला करके तापने लगे. एंड देन आफ्टर दैट ही फील दैट आई वांट टू द राइज. हाउ यू कैन गो? जब भी जिस व्यक्ति को जिस प्लेटफॉर्म पर जिस जगह जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी. सेकंड चित्र है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट बाय समवन टू यू. क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ. अगर 2 स्टेप की जगह मिली है, तीसरा स्टेप बना के देखिए. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर. व्हाई सम टीचर लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट, व्हाई स्टूडेंट लाइक सम ऑफ द टीचर, बिकॉज यू कैन प्रोवाइड द स्पेस, यू कैन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी. अब कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है, हमने कई टीचर से सुना है, जो टीचर ज्यादा नंबर दे देते हैं, बच्चे उनसे खुश रहते हैं. फॉरगेट इट. ऐसा मिसगाइड हो रहे हैं आप. डोंट मिसगाइड इट, क्योंकि स्टूडेंट नो दैट कि व्हाट यू हैव डिड टू दैट. जिसके लिए हम कैपेबल नहीं है, जिस दिन आप दे देंगे वो मार्केट में बेभाव बिक जाएगा. लेकिन जिसके लिए वो कैपेबल है और आप दे देंगे, वो वैल्यूड हो जाएगा. सो यू कैन डेवलप योर स्टूडेंट इन द टर्म्स ऑफ द वैल्यूड, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट कि how we can give the happiness to some of the person like that. So don't wait for opportunity, create it and you can grow and grow. मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद जी का एक जरूर कहता हूँ, take the responsibility on your shoulder and know that you are the creator of your destiny. हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और सोचना चाहिए, either if you are the I am director, what is our responsibility? If you are a teacher, you are a researcher, you are a student, what is your responsibility? For what purpose you are here? If we feel that we can take the things in our body, in our language, in our behavior, then I feel that we will be the highest successful person and we can grow very, very fast and up to the mark. और अपने गुरु जी को नमन प्रणाम करता हूँ. माई गुरु मेंटर प्रोफेसर R.S. गॉड, एंड उनके लिए मैंने लिखा है, टीचर नीड टू चेंज आवर माइंडसेट, परसेप्शन एंड इनकरेज स्टूडेंट. मैंने ग्रो 5 बार लिखा हुआ है. एक में जी, सारे छोटे हैं, एक बड़ा है. ये आपकी कैपेसिटी है कि आप अपने बच्चे को पूरा बड़ा करना चाहते हैं या पार्ट्स में बड़ा करना चाहते हैं, एक अंश देकर के बड़ा करना चाहते हैं या सब कुछ देकर के बड़ा करना चाहते हैं. So I request you all, don't do anything. You can do only in such a manner, in a true form, and grow and grow our student, and you will be the one of the pleasant person, happiest person, and you don't wait any types of the award and reward. Everything is the given by the one person. This is the, मैंने कहा है, faith in God and fear in God. इंसान से क्या डरना है यार? इंसान से डरने की जरूरत नहीं है. उससे डरिए जो रोज देता है और रोज कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है. So we need to this one and we feel that we are the doing the good job. So thank you very much. So any question, any doubt? So I again the thankful to the platform and Nilesh ji bhi, Malvi ji, so thank you Nilesh ji, and a lot of the people are there. So मैंने हमेशा कहा है कि अगर मुझे लेक्चर पर बुलाया जाए, मैं जो बोलूंगा सिर्फ सत्य बोलूंगा, नहीं बोलूंगा. मैं पॉलिश करके नहीं बोलता हूँ. इन दोज डे वन ऑफ द प्रॉब्लम, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, एक स्टडी आई है कि लोग इतना एक्टिंग करने लगे हैं कि एक्टिंग करते करते उनको स्ट्रेस हो गया है. इसकी दवाइयां चालू है. डोंट डू. अरे यार क्यों करना है एक्टिंग? फॉर व्हाट पर्पस? जो अंदर बाहर है उसको आप ट्रांसपेरेंट लाइए एंड यू कैन एंजॉय दैट. तो ये ट्रू स्टडी है, दैनिक भास्कर में बहुत बड़ा छपा था. When we are on the platform, when we are on the screen, हम एक्टिंग करने लगते हैं, हम पॉलिश चीजें बोलने लगते हैं, हम अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं और जो हम कह रहे हैं उससे ज्यादा कोई सत्य नहीं. बट इम्पोर्टेंट इज द हियर
कि सिर्फ उतना बताएं जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, सो दैट पर्सन कैन टेक समथिंग विद यू। जब वो आपसे कनेक्ट होगा, कुछ चीजें आपके साथ लेकर के जाएगा, देन आई फील दैट what you have achieved, what are you can think over it, everything is the here। आप काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मैंने हमेशा कहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है और आप पर दाव जरूर लगाएगा। सो थैंक यू वेरी मच and thanks for all audience for listening carefully, because some of the, I think few minutes, this is the disturbance, some of the net problem or the connectivity with the server. So this types of the FDP, it will be the useful, but I again request to all, when you are working on any platform, we can grow our profession very smoothly and fast। जिस तरह से आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं, अभी कौन बनेगा करोड़पति में एक एसपी आई थी और उसने 1 करोड़ रुपए जीता था। जब अमिताभ बच्चन जी से उसने ये कहा कि मेरे मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने ये रखता है कि जिस ओहदे पर मैं बैठी हूं उस ओहदे की मैं प्रेस्टीज रख सकूं। आज मैं सभी से यही कहता हूं, नथिंग इज द मीनिंग। जिस जगह आप बैठे हैं उसको जरूर बना के रखना, उसमें कोई मिलावट, कोई डेविएशन जीवन में कभी नहीं आने देना, क्योंकि धन लक्ष्मी ये आती जाती रहती। मैं मानता हूं इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट, बट फॉर दिस पर्पस डोंट डू अ शॉर्ट टर्म थिंग। उसने ये कहा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज व्यक्ति को अगर ये चिंता हो जाए कि जिस सीट पर मैं बैठा हूं, जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूं, उसकी डिग्निटी और वैल्यू को बनाए रखना मेरा पहला और अहम कर्तव्य। आप देखिए, आप ग्रो को कोई रोक ही नहीं सकता। There is no need to the external nutrient and value to growing. Thank you, Nilesh ji, Sumit ji, and all panelists. Yes, Thank Nilesh ji, you. thank you. Thank Sir, you, sir. sir, Thank I you have so one much. question. Yes, yes, please. First of all, I am extremely thankful to you, sir, for your an everlasting enthusiasm during the session. It was wonderful hearing you throughout the session, as always. Thank you for sharing amazing and life-changing examples, and it was breathtaking and awesome session, sir. Sir, Thank I you, have one Nilesh ji. query. Nowadays, young academicians are more engaged in writing review articles. Some of the international publishers approaching academicians of pharmacy fraternity, and they appoint individual faculty as a chief editor, and then that chief editor, as a recognition of chief editor, that academician contact other friend circles and other fellow pharma academicians to write individual chapters. And after that, combining all the chapters, they will complete one good international book, and they will enjoy the impact factor of that journal. Or the cost of the book is around $3,000 $2,000, and even a single author of single chapter will not get that published book. But due to that reason, the enjoyment of the impact factor, young academicians are more engaged or involved in writing review article and not in particular research work, because they will get easily impact factor of 3, 4, 5 without doing any research work, just to compile the data by using the different international or highly reputed articles. They just compile one study, one review article in the form of chapter, and then final book edited and published, and they will enjoy the impact factor. So this is good thing, or it may be wrong practice. Just enlighten your words, sir, your opinion. So thank you very much, Nilesh ji, and very, very touching question and very important. At a number of platform, we have also discussed that. देखिए, बहुत बहुत सरल चीज में और सरल भाषा में आपको मैं बताता हूँ कि आज की जो सोसाइटी है, जैसे आपने कहा बुक कॉस्ट इज द $200 $300 लाइक दैट, सो मेनी डॉलर, फॉरगेट इट लाइक दैट। जिस व्यक्ति ने चैप्टर लिखा है और जो बुक लिखी है या जो इम्पैक्ट फैक्टर लिखा है, और वो उस इम्पैक्ट फैक्टर को कह रहा है कि आई एम एंजॉयिंग दिस वन, और फील गुड का इफेक्ट उसको हो रहा है, वो होना चाहिए, दिस इज द गुड थिंग। लेकिन आप ये मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताएं जिसने जो है 5 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर लिखा हो,
या 25 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर लिखा हो और उसको राष्ट्रपति ने या किसी बंदे ने प्लेटफॉर्म पर बुला करके सम्मान किया हो, क्योंकि मुझे पता है ना यार कि वो क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ वो इंडिविजुअल, अगर कोई जैसे पिलग्रिज्म है, अगर कोई कॉपीराइट करके, एक समय मुझे ईयर याद नहीं आ रही है, एक यूनिवर्सिटी में एक ही दिन में 100 थीसिस जमा हो गई थी और उन 100 थीसिस में से 50 थीसिस ऐसी थी कि ऊपर का कवर ही फाड़ पाए थे वो, क्योंकि यूजीसी ने इतना काम टाइम दिया था। तो वो डिग्री का जो फिनोमेना है और जो उसकी यूटिलिटी है, वैल्यू ऑफ द पर्सन, इट कैन बी ओनली अप टू अ सिंपल लेवल। और आप हमारे यहाँ कभी मेरे बारे में पूछे, मैं हम अपनी फैकल्टी को कहते हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे पेपर लिखते हैं, लिख भी रहे, मैं उनको निवेदन करता हूँ मेरा नाम मत डालना। मेरा पेपर में नाम नहीं आता है। जो डायरेक्टर कहे मैं तो चाहूँ एक हमारे साल भर में 100 पेपर, मैं कहता हूँ मेरा नाम नहीं डालना। इसका मैं कारण बताता हूँ और मैंने सीखा, आई फील दैट व्हाट हैपेंड, अगर मेरे 100 पेपर हो जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं गिल्टी फील करूंगा और उसका मैं कारण बता देता हूँ। आई वाज इन ए पैनल, एक मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं आज से 4-5-6-7 साल पहले की बात है, और पैनल बड़ा रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में चल रहा था। उन्होंने हमारा एक पेपर पढ़ा होगा और ही आस्क्ड टू मी, डॉक्टर गुप्ता यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड यू आर दिस। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस ड्रग की तुमने बायोबिलिटी बढ़ाई है वो बायोबिलिटी बढ़ ही नहीं सकती है, तो आपने कैसे बढ़ा दी? यू डिड द गुड जॉब। भाई साहब उसके 2 पेपर छपे थे और उस दिन जो मेरे को गिल्टी फील हुए, जीवन में मैंने सीख लिया है कि किसी भी ब्लाइंड फोल्ड में मुझे यस कहना ही नहीं। मैंने उस प्लेटफॉर्म पर वहां सॉरी फील किया कि देयर इज माई नाम, देयर इज माई कंट्रीब्यूशन, उसमें लिखा हुआ है। वट मैं इससे अनभिज्ञ हूं, क्योंकि आपने 15 साल पुराना, आज हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर टॉपिक ऑफ द एम फार्म, व्हाट इज योर टॉपिक ऑफ पीएचडी, जो मैंने काम किया है मुझे नहीं पता कितना बड़ा किया है, लेकिन भाई साहब एक एक लाइन बता सकता हूं। आज भी मैं अपने ड्रग का स्ट्रक्चर, उसका एसएआर, उसकी केमिस्ट्री आज भी मैं बता सकता हूं। लेकिन when we are the doing के आपने साहब 100 एम फॉर्म ए बार वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपको ये बता दूं, जो लोग इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, इनिशियल आई हैव मेंशन दैट मैंने बहुत छोटी छोटी किताबें लिखी व्हेन आई वाज नॉट एसोसिएट विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिर्फ मैंने काम किया, किताबें लिख लेते हैं क्योंकि 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, किताबें हो गई, उससे धन भी अर्जन आने लगा। लोगों ने जो चैप्टर लिख करके किताबें लिखी होंगे भाई साहब, उनको किताब तक नहीं मिली है, वो चैप्टर की फोटोकॉपी रखे और सब जगह लगाते रहते हैं। और मैं अपनी बात करूं, इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, इस लॉकडाउन में भी वो जो छोटी छोटी किताबें हैं उनने भी लाख रुपए रॉयल्टी दे डाली है और लोग पढ़ रहे हैं। तो अच्छा काम करो, छोटा काम करो, रिकॉग्निशन मिलेगा। आज आपको ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? जो व्यक्ति ने ये किया होगा, जिस दिन आपके सामने इंटरव्यू देने आएगा, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उससे? वो लुका छिपी करता नजर आएगा, बिकॉज यू नो दैट कि देयर इज द नो एनी कंट्रीब्यूशन। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इट कि मेरे पास कई प्लेटफॉर्म से आया कि यू कैन टॉक अबाउट द कोविड पर लेक्चर दे दीजिए साहब एफडी। हमने कहा यार मेरे को कोविड रोज बदल रहा है, मैं रोज नहीं बदल सकता हूँ, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। कोविड इज द चेंजिंग एवरी डे कैरेक्टरिस्टिक, आज कल कर रहा कुछ कर रहा, मैं नहीं कर सकता, और मैं क्यों करूं? इन्होंने मुझसे कहा आई हैव नॉट सिलेक्ट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। आई नीतीश जी को मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, अच्छा ये भी तैयार नहीं था कि आई विल डू द होमवर्क, मैं अपनी पोटेंशियल वैल्यू पर होमवर्क करूंगा और इस पर बोल सकता हूं। अगर एक्सेप्टेबल है देन ओके, अगर नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्योंकि व्हाई आई विल टेक सम ऑफ द डेटा, इधर उधर के फिगर 10-12 फोटो लगा के क्यों दिखाना चाहूं मैं? और मैं थैंकफुल हूं आज जिस स्टेट से मैं यहाँ बोल रहा हूं कि मैं जितने प्रोफेसरों के कांटेक्ट में आया यहाँ पर, साहब क्या पोटेंशियल है, वो अपनी लीग से नहीं हटते हैं। दैट इज वाई दे आर द वेल रिनाउंड। आज आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चलिए कई बार क्या होता है, आंधी के आम होते हैं तो उनको फील गुड करने दीजिए, ठीक है, और वो फील गुड करें, लेकिन उससे आज कितने व्हाट्सएप पर आ रहे हैं कि लोगों ने 500 वेबिनार के सर्टिफिकेट कर डाले और वो अटैची लेकर के हेली हवाई जहाज की तरफ दौड़ रहे हैं। तो फिर एआई सिटी तमाम चीजों ने कि दे कैन नॉट बी कंसीडर इन द एपीआई और लाइक दैट। मैं करूं, करें नहीं करें, फॉरगेट इट। जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट वी आर द डूइंग एट दैट प्लेटफॉर्म, हम उसको कंट्रीब्यूट करते चले जाएं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, व्हेन वी स्टार्ट दिस वन,
हमने एक अल्कोहल, इसको किससे जुड़ा हुआ है, अल्कोहल फ्री सोसाइटी चलाई। तो पंजाब में एक हमारे पास 10-12 लोग आए और वो हमसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप अल्कोहल फ्री सोसाइटी चलाते हैं, इस गांव में ये दारू की दुकान है, इसको तोड़ते हैं तो ना दारू की दुकान होगी ना लोग खरीदेंगे। तो मैंने कहा क्यों तोड़ते हैं यार, व्हाई नॉट भाई, वो व्यक्ति दुकान का किराया भर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे लाइसेंस दिया है, उसको क्यों तोड़ते हैं? आप अपने आप पर होमवर्क क्यों नहीं करते हैं कि मैं नहीं लेता हूं, मैं नहीं पीता हूं, शटर दूसरे दिन गिर जाएगी, क्योंकि जिस दिन खरीदने वाले नहीं होंगे उस दिन क्यों खुलेंगी दुकानें? आज ये आवश्यकता है, जिस दिन हम लोग ये वैल्यू बढ़ा देंगे भाई साहब, वो लोग बेभाव बिक जाएंगे और वो पेपर सिर्फ एक रद्दी बन के रह जाएंगे। 2-4 दिन व्हाट्सएप पर घूमेंगे तेजी से और कोई थम करेगा, कोई बाव करेगा, कोई चकदे फट्टे लाइक दैट, इसके अलावा उनका कोई यूज नहीं होगा। फेसबुक व्हाट्सएप तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर रियल लाइफ में उनको आना है, अगर रियल लाइफ में उनको वर्क करना है तो फील्ड पर काम करना है। तो हमारी अपनी सोच रहती है कि वी डोंट नेवर डू, मैं किसी को स्टॉप क्यों करूं, फर्स्ट वी नीड टू स्टॉप माई सेल्फ। क्या मैंने वो फॉलो किया? अगर हम ऐसा 10 लोगों से फॉलो कर दे आते हैं, दैट्स एनफ। ये हमें कंट्रीब्यूट जरूर नीलेश जी करना चाहिए कि जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो लोग हैं, उनको हम ये पोटेंशिएट करें कि वी नीड टू द वर्क इन सच। लेकिन फिर भी वो कर रहा है तो ठीक है, वो उसको फील गुड हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन अवार्ड रिवार्ड जैसी चीज कहीं से कहीं तक मुझे लगता कि मिलना असंभव है, या ना ही मिलने वाली है और ना ही कोई उसका औचित्य है। बहुत से लोग हैं जो अभी 2% साइंटिस्ट की रिसर्च का जो पैनल आया, ठीक है, हर व्यक्ति ये पूछता है तुम्हारा कितना है, हमने, मैं साइंटिस्ट हुई नहीं, तो मेरे को आवश्यकता है, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम एकेडमिशियन, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन? मैं उस 2% के पीछे माथा मारता रहूं, 100 पेपर ऐसे ही लिखूं, क्या जरूरत है मुझे, फॉर व्हाट पर्पज? मेरी ना सैलरी बढ़ने वाली ना होदा बढ़ने, फिर क्यों करूं मैं? मेरा जो बढ़ने वाला है वो आप लोग हैं। जब आ जाए इंदौर में आप चाय कचौरी सब में से, बस दैट्स एनफ कि अरे यार चलो एक अच्छा बंदा आया है, तो बिल्कुल सर। यही मेरी सेवा है और यही मेरी चीज है। तो सर इससे एक ज्यादा लास्ट, यस यस सर एक लास्ट वन लाइन में आंसर, बट आई नीड आंसर इन वन लाइन because it is very यस specific यस question. After 5 years, what system or what things will run in academic? In one line. 5 बिल्कुल साल एब्सोल्युटली। हमें क्या करना है कि 5 साल के बाद we are in leading stage, and what kind of USP or SOP we will make right now to lead after 5 years in one line. बिल्कुल एक्सीलेंट, इसको 10 साल कर देते हैं नीलेश जी, जो हमारी 2030 है, जो 10 साल कर देते हैं, 2030 है, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन पॉलिसी है, सिर्फ और सिर्फ वही सरवाइव करेंगे जिसमें चाशनी, फिनिश। जिसमें चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे चाशनी। एकेडमी हो। चाशनी, चाशनी जानते? चाशनी, चाशनी। चाशनी कैपेबिलिटी, जिसमें कैपेबिलिटी, मलाई। what capability, sir? कैपेबिलिटी, जैसे मैं आई एम एकेडमिशियन, तो मैं एकेडमिया में हमें कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी। एकेडमिया की कैपेबिलिटी क्या होती है कि आज आप, चलो इस प्लेटफॉर्म पर बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर 100 इंस्टीट्यूट हैं और उन 100 इंस्टीट्यूट में 1000 पीजी के बच्चे जा रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं? बता नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो ताकत रखता हूं, मैं बोल भी दूंगा क्या होना है, लेकिन ये सत्यता लानी पड़ेगी, ये सब कुछ चेक होने वाला है। तो वी नीड टू क्वालिटी। मैंने ये कहा, जो मार्केट आज एक छोटा सा, चलो आपको ने एक लाइन कहा, इसको एक लाइन में जल्दी से पूरा कर देता हूं। आज आपको ये बता दें कि जो हमारे प्लानी इंस्टीट्यूट ले लें या बड़े इंस्टीट्यूट ले लें, आज आप अपने बच्चे को किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना चाहते, सिंपल एक में बताएं। तो आप उसमें दिलाना चाहते हो वहां 20 प्रोफेसर हो, उसमें दिलाना चाहते हैं जहां 200 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हो, वहां दिलाना चाहते हैं जहां 400 पेटेंट हो, कहां दिलाना चाहते हैं? भाई साहब, मैं अपनी औलाद को इनमें से किसी में नहीं दिलाना चाहता, मैं वहां दिलाना चाहता हूं जहां का आउटकम बिकता हो। भाई साहब, 20 लाख रुपए जहां का क्या बिकता हो? आउटकम। तो वही कॉलेज चलेंगे 2030 में जिनका आउटकम बिकेगा।
मतलब सर आउटकम कब प्लेसमेंट दिखेगा? प्लेसमेंट प्लेसमेंट Sir, this is the right answer. I या just want this line. या प्लेसमेंट या नहीं, बिल्कुल प्लेसमेंट आउटकम बिकेगा जहां आउटकम पे। बिल्कुल आउटकम बिकेगा। ओके सर, बस। दिस इज द यानी कि ये कहना ये चाहिए कि सबके लिए ब्रह्मास्त्र है है। नीलेश जी, आउटकम बिकेगा मतलब ये इंडस्ट्री के लिए भी है, एकेडमिया के हाँ, लिए, रिसर्च के हाँ। लिए भी है, तो ये ब्रह्म सबके ज्ञान लिए। है, ये ब्रह्म ज्ञान है पूरे सेशन का सार एक्चुअली सर। So now थैंक यू डॉक्टर साहब, definitely थैंक all यू। academician should work on this USP or SOP. So in 2030, definitely we all are in leading stage. Thank you very much, sir. Thank you, sir. श्योर श्योर, Dr. Nilesh वेलकम। Malvi sir for raising a very good question. Actually, we are also getting that a very good point ki how we will survive after 10 years or within 5 or 10 years. Yes. So thank you once again to Professor Dr. G.D. Gupta sir as a great motivation speech by as a keynote speaker. And really, there are many young minds which are associated with this EFDP. So they will get idea about the actual research. So as you told me about the ethics of research, how we can do the review of literature, how we can choose the topic. So really, we are very blessed with your speech, whatever you have delivered in terms of scientific justification, and you have given a lot of tips to us for young researchers and young faculty members. So definitely, sir, we'll try to maintain the quality of education and research for the better surveillance in the near future. Thank you so much, sir. थैंक यू नीलेश जी। Sir. Thank you Thank so you, sir. much, sir, for enlightening थैंक यू, us थैंक यू। with various elements, ethics, and choice of research. I would like to end up with one famous quote that is if opportunity doesn't knock you, then build a door. And indeed, sir, you have in the entire session deal us with seek us with how we can go for a good research, or whether it is small or big, that doesn't matter, but what ethical point we have to include in our research, that is important. So on the behalf of faculty of pharmacy, I request Dr. Nitesh Kumar Jain sir, dean in charge, to present to felicitate our today's speaker Dr. JD Gupta sir. Thank सुमित you. जी बस 1 मिनट में मैं लेना चाहूँ, बस इसके बाद ये है कि मैं भूल गया उस समय जिस धरती से आप लोग बोल रहे हैं और जहाँ मैंने अपनी एजुकेशन ली है, मध्य प्रदेश, जहाँ का एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट जो फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन डॉक्टर एमएल सराफ जी ने एस्टेब्लिश किया है, हम उसके कहीं ना कहीं झाड़ हैं और कहीं ना कहीं उसके जुड़े हुए लोग हैं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश का एकेडमिशियन थ्रू आउट कंट्री में स्प्रेड है, आज आप जैसे यंगेस्ट डायनामिक फेसेस को देख करके फिर से ये लगता है कि जिस तरह से जो चीजें बाहर आती हैं, आउटकम आता है, डिटोरिएशन ऑफ द एकेडमी आता है, वो बहुत जल्दी पिकअप करें। आप लोग एक अच्छा ग्रो हब डेवलप करें और अच्छे एकेडमिशियन को प्रोड्यूस करें, और अपने आप को हम अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो अच्छे एकेडमिशियन को प्रोडक्ट करके ये साबित कर दें कि मध्य प्रदेश कल भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है और सदैव अच्छा रहना चाहता है। कहीं भी मेरा कंट्रीब्यूशन किसी भी फॉर्मेट में लगता है, आई एम ऑलवेज टू बी हैप्पी, बिकॉज उस इंदौर से मैंने पीएचडी की है और सागर से मेरी बी फार्म एंड एम फार्म है। नियर टू द यूपी एमपी के यूपी का वर्थ है, बट आई ऑलवेज फील दैट कि आज जो कॉलेजेस हैं, एनआरआईएफ है, एआईसीटीसीआईआई है, जेंटलमैन जब भी लिस्ट देखता हूँ सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की खोलता हूँ, और दुख होता है जब उस लिस्ट में हमें दूर दूर तक कभी नाम नहीं दिख पाते हैं। मैं तो पहले 10 में कम से कम 2-3 इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के देखना चाहता हूँ। तो ऐसा हम लीड लें, और आज बहुत सारी, चाहे आर्या हो, एआईसीटीसीआईआई हो, एनआरआई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अवार्ड ही सब कुछ है, बट ये जरूर कहता हूँ कि कुछ पहचान करने के लिए अगर बाजार में निकले हैं तो पैसा खर्च या नहीं करें, बट पॉकेट में तो कुछ होना ही चाहिए ना, तो वो जरूर लेकर के हम निकलें और अच्छा करें। सो थैंक यू वेरी Sir, मच। definitely. So, on behalf of Faculty of Pharmacy, Oriental University, Indore, and with the blessings of Honorable Chancellor, I really, it's an honor to give as a token of appreciation and our love to our beloved mentor, Professor Dr. G.D. Gupta sir, as keynote speaker in this International Faculty Development Program. So really, sir, I am once again very thankful to you for your kindness, for your motivation, and for your beloved speech. And always you have given a lot of encouragement to the young mind.
So you have given some ignition through your speech. So definitely we'll do something better for the society. So it's a token of appreciation from the Faculty of Pharmacy. Sir, please accept this. Thank you so much, sir. Thank you very much, Thank you, and God sir. bless all of you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Can I leave? Yeah, Yes. thank you so much, sir. Yes, sure. Yes, we are ending. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Nilesh Malve, sir. Thank you, sir. Thanks to all the Thank you. participants. We'll meet again for the next session at 2:30 p.m.